Hey guys, very good evening everyone. Good evening guys. Very good evening. स्वागत है सभी का इस शानदार जानदार सुपर ऑसम सुपर अमेजिंग सुपर फैंटास्टिक एंड सुपर रॉकिंग यूट्यूब चैनल of India's largest online education platform, an academy. And guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years to the lovely students of chartered accountancy course. And guys, today I am live for the last session of our first topic, meaning and scope of accounting. A very good evening to everyone. Shams, Manisha, very good evening guys. Yes, so guys, screen पर आप देख सकते हैं, this is the super awesome team of India's largest online education platform, Unacademy for CA Foundation, जिसका नाम है दोस्तों बाहुबली टीम. We are a team of 9 educators who teach you on 2 different channels. One is an Unacademy CA Foundation Pro channel, and another is an Unacademy CA Foundation channel. Okay, so let's talk about Unacademy. Unacademy conducts its classes in 2 formats. They give you free classes as well as paid classes. Free classes are conducted on YouTube as well as special, and paid classes you have 2 options. You can either go for Plus or Iconic. I'll be explaining both of them. Okay, talking about the free sessions, the entire dedicated batch for November 22 is live, which starts its first session at 6 p.m. and concludes at 10 p.m. with my session. So from 6 p.m. to 10 p.m. we have a dedicated batch for November 22 students, absolutely free on YouTube, conducted by 4 educators covering all 4 subjects. Talking about my schedule guys, today I will be completing my first topic, meaning and scope of accounting, and from tomorrow onwards I will be starting with the very important topic of accounting cycle, the most important topic of your syllabus to understand the basics of accounts. From tomorrow onwards I will be considering that a 10th cleared student has come towards me for learning the accounts. I will be explaining accounts from ABCD, from very basics. So even if you are a science student or if you are a 10th pass student, you can easily join this particular topic to understand the basics. I will be spending considerable time for chapter number 2 because I want basics to be strong, very strong. Why? Your remaining topics are dependent on the basics of accounts. The more the stronger your basics are, the more comfortable you will be with remaining topics. And needless to say, accounts is the core subject of chartered accountancy course. आपको फाउंडेशन में भी पढ़ना है, इंटर में भी पढ़ना है, एंड गाइस फाइनल में भी पढ़ना है. तो यू नीड टू हैव अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर अकाउंट्स. ओके, यस. Kartia, Kajal, very good evening. Okay, so let's talk about the paid platforms. Unacademy conducts its paid classes also, and under which you have 2 options. Either you can go for Plus subscription or Iconic subscription. I'll explain the features of both the formats. So guys, talking about the Plus batches, there will be 2 dedicated batches for November 22 students. One will be Akagrata 1.0, which is starting from tomorrow itself, and second is 2.0, which will be commencing from 16th of June. From 26th of May, that is tomorrow, we are commencing our first batch 1.2 that will conclude by 30th September, and our second batch, dedicated batch, regular batch, will start from 16th of June and will conclude by 15th October. This is the super awesome team of 1.0 and this is the team of 2.0. I will be teaching you accounts in 2.0, which will commence from 16th of June. These are the features of our plus batches guys. The best features you can ever find for a CA foundation coaching in entire India. Now, how you can be a part of Unacademy's plus batches? You need to buy an active subscription. Once you buy your subscription, choosing the period of suitability, you can go for batches. So guys, the subscription is available for 2 months, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months. Whatever period you chooses, it depends on your requirement.
For example, 6 months plan is going to cost you 10,800 after putting my code, which is DKJ10. You can also go for iconic subscription जहाँ आपको मिलेगा personal coach, printed books, evaluated test series and discussion channel. The prices are appearing on your screen. You are getting 10% off if you are applying my code. You can also go for our test series product जिसका नाम है UA Lite, which is one of the most cost effective test series product in entire India. It is going to cost you for 3 months 1350, for 6 months 2160, and for 12 months 2700 guys. But I always suggest my students to go for the combo subscription. The reason is very simple: whatever your result is, it doesn't matter if you have a combo subscription. And if you are buying 24 months ka subscription, combo subscription, it will cost you only 32,850, which is very very cost effective. And once you buy this subscription today, अगर अन अकेडमी प्राइजेस इंक्रीज करता है फ्यूचर में सी एंटर के, that price increase will not be applicable to you. Okay, so guys, DKJ10 is the code you need to apply. Do not forget to use my code, which is DKJ10. Do like, share, subscribe both these YouTube channels. These are the dedicated YouTube channels of an academy for CA Foundation students. Guys, you can also join our Telegram channel, An Academy CA Foundation, which has more than 22,000 students जो daily हमसे पाते हैं दोस्तों, link notes and updates. Please download Unacademy's learning app also, because you will get many free classes on the Unacademy's learning app as well. And there you can follow me. My ID is CA underscore Darshan underscore Jain. And guys, this is the link you can follow for free content of CA Foundation by Bahubali team. Yes, and whenever you are tagging us on the social media, do not forget to use the hashtag CA Bahubali team. Okay. Yes, very very good evening guys. Let's begin. So after commencing our batch for November 22, the first topic we started was meaning and scope of accounting. In this particular topic we studied introduction of accounting. We studied meaning of accounting, traditional and modern definition. Then we studied procedural aspects of accounting. Then we did objectives of accounting. Then we studied functions of accounting. Then we did advantages of accounting. Then we studied limitations of accounting. Then we did bookkeeping, accounting and accountancy, and difference between bookkeeping and accounting. Then we studied users of accounting information. Now guys, two headings, two concepts are remaining. First is relationship of accounting with other disciplines, and what is the role of a chartered accountant in a society. Now, once you are doing a chartered accountancy course, one thing is very clear: the core subject will be accountancy. So, if the core subject is accountancy, why you have other subject in your syllabus? You have law at a foundation level, at a inter level, as well as at a final level. If accounts is the core subject, why you need to study law? There may be some relationship of accounting and law, and that is the reason it has been put in your syllabus. You also need to study economics. What is the relationship of accounting and economics that we need to study? You also have maths, stats, LR in your syllabus. What is the relationship of accounting with these subjects? You also have cost accounting in CA Inter, financial management at CA Inter. These all the subjects must have some relationship with accounting, and hence they have been included in your syllabus. So let's try to understand guys, what is the in fact relationship between accounting and other subjects. Okay, let's begin session for today. Let's see relationship of accounting with various subjects. To start with, first we will start relationship of accounting and economics. Every one of you have studied economics. Guys, tell me, what is the meaning of economics? What is the definition of economics? Yes, I want answer from everyone. जितने भी लोग attend कर रहे हैं, please try to answer. Please try to answer. What is the meaning of economics? Creator Shiv, accounts is hard for me. Just do one thing, attend regularly. It will be one of the easiest subject for you.
यस, मैक्सवेल कह रहा है सर इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। मैंने हिंदी का प्रोनाउंसमेंट नहीं पूछा कि क्या होता है, हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं पूछा। आई वांट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, लेट मी नो द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। यस, टेल मी द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। Yes, guys, I have given my CA foundation in December and cleared. One thing I want to share with you that if you want to score good marks in accounts, then you must attend the marathon of DJ Sir whenever his exam. Okay, thank you so much for that. Yes, Lakshmi says limited resources, unlimited wants. Correct. What is economics? Economics is nothing but a study of human behavior in relation to unlimited wants and limited resources. Now, how accounts and economics are related? First, कितने resources आपके पास available है? This will be shown by your accounting information. Is that fine? Again, you also have concept of national income in economics. How do you determine national income? सपोज एक कंट्री में 100 लोग रहते हैं, आई एम टेकिंग अ स्मॉल एग्जांपल। वो पूरे 100 लोगों का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, इनकम कैलकुलेट होगा, ऐड होगा, दैट विल बी नेशनल इनकम। अब उनका इनकम कहां से होगा पता, हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो इफ यू वांट टू अराइव एट द नेशनल इनकम ऑफ द एनी कंट्री, you need to have accounting information. Thus accounting and economics is related. There is a concept of per capita income in economics. How do you determine per capita income? National income divided by population. This national income will be arrived at after considering the accounting information. Is that fine? Thus economics and accounts are related. Let's see in detail. Yes. Then let's see. Professor Robbins has defined the term economics as follows. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses. कितने मीन से आपके पास कितने रिसोर्सेज है, कौन बताएगा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। However, when a person is to take any economic decision, he has to depend mainly on the accounting information. Generally, accountant is concerned with the economic problems of one enterprise, but an economist is concerned with the problems of industry as a whole. अकाउंटेंट एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में बात करता है, जबकि एक इकोनॉमिस्ट पूरे कंट्री की बात करता है। इज दैट फाइन? एंड मेरा कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, it will depend on accounting information. I need to buy a car, it will depend on my accounting information to know that whether I am having sufficient resources to buy that particular car. So every economic decision depends upon your accounting information. Next, micro level data arranged by accounting system is summed up to get macro level database. Is that fine? मतलब सबकी इनकम ऐड कर दो, नेशनल इनकम बन जाएगा. इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. Thus, at the macro level, accounting provides the basic data upon which the economic models are developed. Next, however, there exists a wide gulf between economics and accountant. Concepts of income and capital, for example, the profit to an economist is not the same thing as the profit according to the accountant. अकाउंटेंट के लिए प्रॉफिट क्या हो गया? इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट. इकोनॉमिस्ट के लिए क्या है? कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा नीड्स को सेटिस्फाई करना इज अ job of an economist. Profit according to economist is maximum utilization of resources in limited time in limited resources. Optimum utilization हो रहा है, it is a profit for economist, but for accountant income should be greater than expenses. Next, no doubt accountants have derived the ideas of value, income, and capital maintenance from economists.
but suitably modified to take them usable in the practical circumstances. Thus, economics and accounting are closely related subjects. Value, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बट अकाउंटेंट ने ले लिया है. इज दैट फाइन? कोई भी चीज की वैल्यू अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालते हैं तो इट हैज बीन अराइव्ड एट फ्रॉम इकोनॉमिक्स. ठीक है. इनकम we have borrowed from economics. Capital, this is the concept of economics. So guys, this is how economics and accounting is related. ठीक है. yes, economics, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट जो होते हैं दे थिंक अबाउट पर्टिकुलर इकोनॉमी और अकाउंटेंट थिंक्स अबाउट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर एंटिटी. ठीक है. आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू रीड दिस. नोट्स ऑलरेडी चैट बॉक्स में पिन करके रखे हुए हैं. प्लीज गो थ्रू द नोट्स. ठीक है. एक बार पढ़ लेना है. चलो. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ मैथमेटिक्स? Why mathematics have been included in your syllabus? सर बच्चों को फेल करने के लिए. ऐसी कोई बात नहीं है. There is the relationship of mathematics with accounting and hence it is included in your syllabus. Okay, let's see what is the relationship of accounting and economics. Knowledge of arithmetic and algebra is a prerequisite for accounting computations and measurements. See, whenever there will be figures, accounting is all about figures, and whenever you talk about figures you cannot escape from arithmetic, you cannot escape from algebra, and these both are part of mathematics. So whenever you will talk about figures there will be involvement of mathematics, and accounting is nothing but dealing with figures. Okay, so calculation of interest, annuity, etc. are some examples of fundamental uses of mathematics in accounting. You require interest calculation in accounting, that is provided by mathematics. Next, presently graphs and charts are being widely used for communicating accounting information to the users. Thus, the knowledge in geometry and trigonometry has become essential to have better understanding about the accounting communication system. Now, what are the procedural aspects of accounting? Recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and the last part is communicating. You need to communicate the accounting information to the users of account. Who are the users? Internal user, external user. These details are communicated. This information is communicated with the help of graphs and charts. पाई चार्ट हो गया, डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए. ऑल दीज आर यूज्ड टू कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स. And once we are using graphs and charts, that means we are using mathematics. I hope we are getting it. Next, किसी को कोई doubt? Anyone any doubt in this? Next, relationship of accounting with statistics. May I know what is the meaning of statistics? कोई बताएगा what is the meaning of statistics? Yes, what is statistics? Conversion of raw data into meaningful information is known as statistics. हम अकाउंट्स में क्या करते हैं? हम पिछले 10 साल का प्रोग्रेस निकालते हैं कि साल सेल कितना बड़ा होगा. हम पिछले 10 साल का प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं कि कितना ग्रो हुआ होगा. दीज ऑल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, एंड दिस इज हाउ स्टैटिस्टिक्स इज बीइंग यूज्ड इन अकाउंट्स. चेक. Collection, tabulation, analysis, and presentation of data are some primary functions which are performed by both accountants and statistician. Statistician क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करता है, उसको टेबुलेट करता है, उसको एनालाइज करता है और एक मीनिंगफुल तरीके से उसको प्रेजेंट करता है. अकाउंटेंट भी वही करता है. अकाउंटेंट को हाईलाइट करना है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, वो प्रॉफिटेबिलिटी हाईलाइट कर देगा कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स.
वो ये बोलेगा कि माय प्रॉफिट हैज इंक्रीज बाय 54% फॉर एग्जांपल इन द लास्ट 5 years। ये कहां से आया? दिस इज नथिंग बट यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। An accountant is mainly concerned with the monetary data, although to some extent he is also concerned with quantitative data. But a statistician is concerned equally with the monetary as well as quantitative. Accountant को ज्यादातर monetary data लगेगा. He is not related or he is not interested in quantitative data. For example, कितना स्टॉक है अकाउंटेंट को कोई लेना देना नहीं है. वो स्टॉक की वैल्यू कितनी है दैट इज इंपॉर्टेंट. ट्रक 10 ट्रक होगी कंपनी के पास, कोई लेना देना नहीं है 10 ट्रक है या 20 ट्रक है. उन 10 ट्रक 20 ट्रक का वैल्यू कितना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट फाइन? नेक्स्ट, द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स in accounting can be appreciated better in context of the nature of the accounting records. Accounting information is very precise. It is exact to the last paisa, but for decision making purpose such precision is not necessary. Hence the statistical approximations are sought. बड़े बड़े बिजनेस से लाखों करोड़ रुपए में प्रॉफिट और टर्नओवर होते हैं. ठीक है, स्टेटिस्टिक्स क्या करता है? हमें उसको शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए मदद करता है. फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रॉफिट आया ये, ठीक है, कितना हो गया ये? यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. ठीक है, कितना आ गया अब ये? यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़. ठीक है, नाउ मुकेश अंबानी फोन करके पूछता है उसके सीएफओ को, यार हमारे लास्ट ईयर का प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर क्या था? वो बोल रहा है सर 403 करोड़ 15 लाख 94,891. जब तक वो फोन रख देगा उसके बाद इतना समय नहीं है कि आप उसको डिटेल में पैसे तक बोल रहे हो ना. व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट दिस फिगर इनटू करोर्स. और क्या बोलेंगे? द प्रॉफिट इज अप्रोक्सीमेट 403 करोड़. ठीक है, अब ये जो अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं दिस इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स. आई होप यू आर गेटिंग दिस. दिस इज हाउ वी यूज स्टैटिस्टिक्स इन अकाउंट्स. ठीक है, चल नेक्स्ट. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर जनरली कन्फाइंड टू 1 year. अकाउंटिंग 1 साल की होती है, लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम लॉन्गर पीरियड का करते हैं. 20 साल का सेल का प्रोग्रेस, 15 साल का प्रॉफिटेबिलिटी का प्रोग्रेस, ठीक है, 10 साल का एक्सपेंडिचर का स्टेटस. दिस इज ऑल टेकन केयर ऑफ बाय स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. While statistical analysis is more useful if the longer period is taken. Next, statistical methods are helpful in developing accounting data and their interrelationship. नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जीपी रेशियो विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जो भी वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं रेशियो में वो कौन बताता है? स्टैटिस्टिक्स. Therefore, the study and application of statistical methods will add extra edge to the accounting data. It will give you interpretation, which is one of the most important part of accounting. ठीक है. Next, what is the relationship of accounting with law? Now, if you are a partnership firm, you will have to follow Partnership Act. And Partnership Act बताता है कि पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग कैसे होगा, लॉस कौन से एप्लीकेबल रहेंगे, क्या प्रोविजन होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ी होगी दोस्तों, तो उसमें दिया हुआ है इफ देयर इज नो एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल. इफ देयर इज नो एग्रीमेंट no interest on capital can be provided. If there is no agreement, no salary or remuneration can be given to a partner. ये क्या है? These are the provisions of law. But while doing accounting, we are using these provisions. That means there is a relationship of law and accounting. For a proprietor, for a partnership firm, there is a separate format for profit and loss account and balance sheet. But for a company, there is a separate format of balance sheet because Companies Act prescribes new format
or another format which is different from the format of proprietorship and partnership. दैट मीन्स कंपनीज एक्ट ने फॉर्मेट दिया है, वही हम लोग फॉलो करेंगे अकाउंटिंग में. दिस इज हाउ अकाउंटिंग एंड लॉ इज रिलेटेड. चेक. एवरी बिजनेस हाउस हैज टू वर्क विद इन लीगल एनवायरमेंट. All the transaction with suppliers and customers are governed by the Contract Act. जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड होंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से रिलेटेड होंगे. ठीक है. तो भाई लॉ का इंपॉर्टेंस बहुत है हमारे बिजनेस एक्टिविटीज में. द एंटिटी इटसेल्फ इज क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय लॉ. अगर पार्टनरशिप है इट इज कंट्रोल्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट. अगर आपने कंपनी बनाया इट इज कंट्रोल्ड बाय कंपनीज एक्ट. फॉर एग्जाम्पल अ पार्टनरशिप बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट. अ कंपनी इज क्रिएटेड एंड कंट्रोल्ड बाय कंपनीज एक्ट. Very often the accounting system to be followed has been prescribed by the law. For example, the Companies Act has prescribed the format of financial statements. कंपनीज एक्ट बोलता है अगर आप कंपनी हो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी. लॉ की वजह से अकाउंटिंग में बदलाव आ जाएगा. कंपनीज एक्ट बोलता है कि हमें ये फॉर्मेट में बैलेंस शीट चाहिए, अकाउंटिंग चेंज हो गई. इज दैट फाइन? मतलब कभी कभी ऐसा होगा लॉ के वजह से अकाउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी, या कभी कभी अकाउंटिंग के वजह से लॉ में भी चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है. हाउएवर लीगल प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द अकाउंटिंग सिस्टम इज द प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द अकाउंटिंग नॉलेज. This is to say that a legislation about accounting system cannot be enacted unless there is a corresponding development in the accounting discipline. इसका मतलब क्या? Accounting influences law and is also influenced by law. मतलब अकाउंटिंग लॉ में भी चेंज ला सकता है, या लॉ की वजह से अकाउंटिंग में भी चेंजेस आ सकते हैं. वो इन्फ्लुएंस भी कर सकता है लॉ को, और लॉ से इन्फ्लुएंस भी हो सकता है. ठीक है. Now last part guys, what is the relationship of accounting with management? See, management has to take various decisions and their decisions are based on accounting data. Profitability कितना है, sales turnover कितना है, ये सारे उनके decisions accounting information पे based होते हैं. Every management concentrates focus on the accounting information to take corrective steps in the business. Let's see. Management is a broad occupational field which comprises many functions and applications of many disciplines including statistics, mathematics, economics, etc. Accountants are well placed in the management and play a key role in the management team. Accountant का role बहुत ज़्यादा important है management में, because every managerial decision you take for the business has a relevance with accounting, is dependent on accounting. A large portion of accounting information is prepared for the management decision making. In the management team, an accountant is in a better position to understand and use data. In other words, since an accountant plays an active role in the management, he understands the data requirement, so accounting system can be molded to serve the management purpose. And guys, this is how economics is related with accounts, maths is related with accounts, stats is related with accounts, law is related with accounts, management is related with accounts. Okay. Now, last part of our first topic, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सोसाइटी. नाउ ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूंगा, बताना दोस्तों एक सीए क्या क्या सोसाइटी को दे सकता है. व्हाट सर्विसेज कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी. किस फॉर्म में वो सोसाइटी को सर्व कर सकता है. यस यस, एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम यू. जो भी आपको लगता है जवाब दीजिएगा. Yes, quickly guys, keep answering. So taxation, perfect. CA may help you to pay your taxes, perfect. Auditing, perfect. Perfect, audit. What else? जीएसटी में, टैक्सेशन में आ गया वो. टैक्सेशन दो टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे सकता है सीए, परफेक्ट.
Yes, consultant. He can be a business consultant for you. You can seek advice relating to your business from a chartered accountant. Perfect. What else? What else? Consistency. What is consistency? Now, और क्या दे सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी को? What else a chartered accountant provides to the society? चलो लेट्स सी नाउ क्या क्या रोल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट निभा सकता है. फर्स्ट, ही कैन डू हिज पर्सनल प्रैक्टिस. दैट जैसे मैं हूं, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं प्रैक्टिस भी करता हूं. ठीक है. सो यू कैन इधर ऑप्ट फॉर, अगर सीए बनने के बाद क्या क्या ऑप्शन है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. सबसे पहले यू कैन गो फॉर प्रैक्टिस. आप आपकी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो जहाँ पे आप आपके क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हो रिलेटिंग टू ऑडिटिंग, रिलेटिंग टू टैक्सेशन. ठीक है. रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, रिलेटिंग टू बिजनेस कंसल्टेंसी, रिलेटिंग टू फॉरेंसिक ऑडिट्स एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री. द सेकेंड ऑप्शन यू हैव इज, आप किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में आप एज अ जॉब अप्लाई करते हो. That is the second option you are having as a chartered accountant. First is setting up your own practice. Second is taking up a job in the industry. Third, chartered accountants in public sector enterprises. Now, what do you mean by public sector enterprise? Public sector enterprises, those enterprises which has the involvement of government, general public. Is that fine? So guys, वहां पर भी you can take up as a job in the public sector enterprise. And guys, chartered accountant in framing fiscal policies. There are many chartered accountant in politics. There are many chartered accountants acting as a bureaucrats in the ministry of finance. Ministry of finance वगैरह में दोस्तों, there are many chartered accountants who are framing the fiscal policies of the country. So after being a chartered accountant, you have a number of options. You can go for private practice. You can apply for a job. You can opt for public sector enterprise. You can opt way to serve the government. You can do your own business. And number of options are open for you. Next, what are the area of service by a practicing chartered accountant? Now, since I am a practicing chartered accountant, थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या क्या मदद कर सकता है. पहला, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सीए में हेल्प यू टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर सकता है. सेकेंड, स्टैट्यूटरी ऑडिट. व्हाट यू मीन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिट? ऑडिट टू बी डन एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट. ठीक है. नाउ, इनकम टैक्स लॉ ने प्रिस्क्राइब किया है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होता है आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी. कंपनीज एक्ट बोलता है कि इफ यू आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, आपको कंपलसरी एक सीए से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा. सो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. इंटरनल ऑडिट. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ऑडिट? Auditing the organization internally after a frequent period, every quarterly, every monthly, every 6 monthly. Is that fine? Statutory audit is done by the external auditors. Internal audit can be done by external auditors as well as internal auditors. Next, taxation. There are a number of taxations. Personal tax, that means income tax, GST, customs, VAT. Is that fine? All these taxes पे करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट गिव्स यू सर्विस, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी. अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट में गिव यू अ कंसल्टेंसी रिलेटिंग टू योर बिजनेस. कॉस्ट कटिंग के लिए आपको गाइड कर सकता है, कंसल्टेंसी दे सकता है. कौन सा फॉर्मेट चूज करना है. मान लो एक फैमिली आपके पास आई है, वो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है. दे विल आस्क यू, सर हम किस फॉर्मेट में जाए? शैल वी गो फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप, शैल वी गो फॉर द पार्टनरशिप, शैल वी गो फॉर द कंपनीज, और शैल वी गो फॉर द एलएलपी? किस फॉर्मेट में हमने हमारे बिजनेस को रजिस्टर करना चाहिए? अ सीए गाइड्स देम विथ all the advantages and disadvantages under each option so that they can take up the decision कि उनको किस फॉर्मेट में जाना है.
ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइस भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, इज दैट फाइन। कहाँ इन्वेस्ट करना है, अगर आपके पास स्पेयर में पैसा है कहाँ इन्वेस्ट करें, व्हाट शुड बी, हाउ योर सेविंग्स नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड, ये भी फाइनेंशियल एडवाइस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है। यस, ही मे ऑल्सो गाइड यू फॉर इन्वेस्टमेंट, कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। Yes, he may also guide you for insurance. There are two types of insurance: general insurance as well as life insurance. Life insurance cover the life of the individual, whereas general insurance is relating to fire insurance, theft insurance, etc. Business expansion: if you want to expand the business, even chartered accountant can guide you how to expand the business in the long term. And guys, investigations and secretarial work, yes, there are many compliances to be done under the Companies Act. वो सारे compliances एक CA आपको services दे सकता है। Yes, and he may also help you for investigation. मान लो किसी कस्टमर का क्रेडिट एनालिसिस करना है, आपको करवाना है, a chartered accountant may provide you the services. किसी का ड्यू डिलीजेंस करवाना है, chartered accountant may provide you the service. Is that fine? So guys, these are the various services to be provided by a practicing chartered accountant. Expect a 5 marks question on this particular topic. Okay, that's it guys. Here ends topic number 1. एक बार फिर से देख लेंगे बर्ड्स आई व्यू में कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। नाउ फ्रॉम टुमारो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। आफ्टर 10 to 12 डेज, 10 से 12 दिन ये टॉपिक चलेगा, क्योंकि बहुत स्लो पढ़ाता हूं मैं और बहुत आराम आराम से करवाता हूँ। आफ्टर 12 डेज यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट, सब कुछ बहुत इजीली समझ में आएगा। इट डजेंट मैटर आपने पहले कभी अकाउंट्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ABCD, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है। चलो, सो गाइस दिस एंड्स आवर टॉपिक नंबर 1। लेट्स सी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि व्हाट इज अकाउंटिंग, ठीक है, जहां हमें समझ में आया कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और ये इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, राजा महाराजाओं के जमाने में हुई थी, स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग से हुई थी। स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग इज द रूट कॉज ऑफ अकाउंटिंग। फिर उसके बाद हमने देखा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डेफिनेशन। ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या बोलता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट टू रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रीट एंड कम्युनिकेट व्हाट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस। मॉडर्न डेफिनेशन ये बोलता है इनपुट दो, प्रोसेस हो जाएगा, आउटपुट आपको मिल जाएगा। देन वी स्टडीड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या देखा हमने उसमें, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। देन वी स्टडीड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, to record the transaction, then to know the profit, to know the financial position, ये हमने देखा। फिर हमने देखा फंक्शन, डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग, पास्ट के बेसिस पे करंट का डेटा, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, दीज आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फिर हमने एडवांटेजेस देखे, कई एडवांटेजेस हैं, ठीक है। फिर उसके हमने लिमिटेशंस भी देखे। लिमिटेशंस में क्या क्या देखा कि कॉस्ट कंसेप्ट है जिससे ट्रू एंड फेयर वैल्यू एसेट की पता नहीं चलती, पर्सनल जजमेंट पे बेस्ड है अकाउंट्स, ठीक है। सो हर एक सीए के हिसाब से या हर एक कंपनी का सब कुछ सेम रहते हुए भी रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं। देयर इज नो प्लेस फॉर क्वांटिटेटिव डाटा इन accounts, that means anything which cannot be expressed in terms of money will not be reflected in the books of accounts. फिर हमने पढ़ा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, व्हाट इज बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। फिर उसके बाद समराइजिंग एंड एनालाइजिंग, इट इज अकाउंटिंग। एंड देन इंटरप्रिटिंग मीन्स अकाउंटेंसी। Who are the users of accounting information? There are two types of users, internal users, external users. इंटरनल यूजर में कौन कौन आ जाएगा, ओनली मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में प्रेजेंट इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, ठीक है। देन वी स्टडीड रिलेशनशिप ऑफ, फिर हमने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी देखा, उसमें हमने देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग,
Then we studied social responsibility accounting, human resource accounting and inflation accounting. फिर उसके बाद हमने देखा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल. फिर उसके बाद हमने देखा रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन, हाउ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स आर रिलेटेड, how maths and accounts is related, how stats and accounts is related, how law and accounts is related and how management and accounts is related. फिर हमने देखा रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सोसाइटी. वहां पे हमने स्टडी किया दोस्तों, a chartered accountant can practice, he may get a job in a manufacturing or any organization. Third, he may apply for a job under a public sector enterprise. And guys, he may also work with government to draft the fiscal policies. Then the last part that we studied was what is the role of a practicing chartered accountant. एक practicing chartered accountant आपको क्या क्या services दे सकता है? So guys, taxation, business advice, is that fine? Statutory audit, maintenance of books of account, insurance, business advice, secretarial work, etc. These are all the work of a chartered accountant that can be served to the society. So this was entire our first topic, meaning and scope of accounting. I again repeat that tomorrow we are going to start the most important topic of your syllabus, because this is the topic that is going to change your approach towards accountancy. किसी को भी अगर accountancy एक difficult subject लगता है, you cannot miss tomorrow's topic that we are starting. Is that fine? That's it guys, that's it for today. See you tomorrow with the new Josh, with the high Josh, and with the new topic accounting cycle. Thank you so much guys, have a great time everyone, see you soon.